Hello students, welcome to the lecture number 10 of chapter 3. In lecture number 9, we have discussed about two types of quadrilateral such as rhombus and square. So in case of rhombus, all the four sides are equal. Similarly, in case of square, all the four sides are equal. Okay, in rhombus, the opposite sides are parallel. In square also, the opposite sides are parallel. But only difference is that in case of rhombus, all angles are not 90 degree, but in case of square all the angles are 90 degree. How gote difference kon thila na gote rhombus ro duita ko diagonal length same नथिला but gote square रो दुटा को diagonal length same थिला. बाकी जहां भी प्रॉपर्टी हमें पढिचे rhombus रो जहां square रो भी सेम. Okay, that is the only reason why all the squares can be told as rhombus, but all the rhombus are not square. सबु स्क्वायर को हमें रॉम्बस कहि परिबा बट सबु रॉम्बस को हमें स्क्वायर कहि परिबा नाही. बुझियला कि नाही? नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अनदर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल that is known as rectangle. Okay, so our today's lecture based on rectangle. So let us first understand what is a rectangle, right? So a rectangle is also a quadrilateral. एटी हम देखि पाउछे यार केतरा साइड अछि, चारटा का साइड अछि, तले रेक्टेंगल को हमें कोन कहि परिबा? इट इज ए quadrilateral. Okay, so it has how many sides? Four sides: AB, BC, CD and DA. Okay, next the opposite sides are parallel. Here this side is parallel to this side and this side is parallel to this side, so opposite sides are parallel. ताले हम देखो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर देबा. बुझिया कि नहीं? सो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. अंडरस्टूड? सो AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. Okay, बुझियला? सेकंड प्रॉपर्टी. बर्तमान हमें थर्ड प्रॉपर्टी को जीवा. व्हाट इज थर्ड प्रॉपर्टी? अच्छा, हमें देखि पाउछे गोटे रेक्टेंगल एटा कोन कहआ जाय? लेंथ कहआ जाय. हो कि नहीं? एटा कोन कहआ जाय? ब्रेड्थ कहआ जाय. सिंबॉलिकली स्मॉल b बोली कहआ जाय, आको सिंबॉलिकली स्मॉल l बोली कहआ जाय. ओके, एटा को भी हमें लेंथ कहबा, एटा को भी हमें ब्रेड्थ कहबा. सो इन ए रेक्टेंगल द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ. ताहले यार लेंथ जेते ही दिबो यार लेंथ सेते ही दिबो, ए साइड लेंथ जेते ही दिबो ए साइड लेंथ सेते ही दिबो. सो ब्रेड्थ आर इक्वल एंड लेंथ्स आर आल्सो इक्वल. सो यू कैन राइट इन अ रेक्टेंगल द ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. ओके, सो opposite sides are of equal length. बुझियला कि नहीं? ताले AB is equal to DC. सो ताको हमें केमति रिप्रेजेंट करिबा? गोटे गोटे सिंगल गार दे देले एंड AD is equal to BC. ताको डबल. Okay, so this is third property, that the length as well as the breadth of opposite sides are equal. Okay, so next property, property number 4. In case of rectangle, all the angles are 90 degree. Okay, so all the angles are of 90 degree. So all the angles are 90 degree. तले ए फिगर रे हम देखि पारुचे कोन एंगल A रो वैल्यू जा हेतिबो, एंगल B रो वैल्यू भी सेया, एंगल C रो वैल्यू भी सेया, एंगल D रो वैल्यू भी सेया, एंड ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री. अंडरस्टूड? अच्छा, एबे कहलो गोटे रेक्टेंगल ऑपोजिट एंगल रो वैल्यू सेम ना सेम नुआ? ये 90 है, यार ऑपोजिट एंगल की है B भी 90 डिग्री. ए एंगल ऑपोजिट एंगल C, ए एंगल जो 90 डिग्री होती, C एंगल भी कितने डिग्री? 90 डिग्री. सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ a rectangle are equal. Okay, so write it. Opposite angles are of equal
value or equal measure. Okay, next कौन देखिबा ना कंजिक्यूटिव एंगल मान को ऐड कले से मान को वैल्यू केते होउची डी एंगल लो कंजिक्यूटिव एंगल के सी सो डी और सी को ऐड करलो केते होउची 90 + 90 जा 180 डी रो कंजिक्यूटिव ए डी और ए को ऐड करले केते होउची 90 + 90 180 similarly the consecutive angle for C is D and B C और D को ऐड करे 90 + 90 180 C और B को भी ऐड करे 90 + 90 180 so the sum of consecutive angles are 180 degree. Okay, so sum of consecutive angles is 180 degree. Understood? Next property कौन ना हमें जदि डायगोनल ड्रॉ करिबा AC डायगोनल आ हला BD डायगोनल तो हम देखिबा जे दुटा को डायगोनल लेंथ इक्वल आछंती ओके ताले गोटे रेक्टेंगल जो दुटा डायगोनल क्रिएट होबा से डायगोनल रो लेंथ समान होबो ओके सो द लेंथ ऑफ टू डायगोनल आर इक्वल ओके ताले ए फिगर में हम लिखि परिबा AC = BD ताले AC = BD right coming to the next property कौन ना AC diagonal and BD diagonal meet each other at a common point AC और BD diagonal परस्पर को गोटे पॉइंट रे मीट करूचंती से पॉइंट को कौन कहा जाए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बुझियला कि नहीं जो पॉइंट रे दुईटा लाइन परस्पर को मीट करंती से पॉइंट को कहा जाए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एटा कौन कहा जाय परिबो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हला सो जो पॉइंट रे परस्पर को से माने मीट करूचंती एग्जैक्टली सही पॉइंट रे डायगोनल परस्पर को समान दुई भाग रे विभक्त करबे इट मींस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द टू डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर बाइसेक्ट माने कोन ना माने समान दुई भाग रे कट हे जिवे बुझियला को जगह रे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ताले कोन हबो ना ए जो बीडी डायगोनल टा ए जगह रे कोन हे जिवो समान दी भाग हे जिवो एटा गोटे भाग एटा गोटे भाग ताको हम एमति देखि परिबा देखो हमने बुझियला ना नहीं ओटे दिलेन जहा ओटे दिलेन सेया सिमिलरली ए डायगोनल टा भी समान दुई भाग हे जिवो ताले AO = CO 1 2 3 4 1 2 3 4 okay so we can write at the point of intersection the two diagonals bisect each other परस्पर को समान दुई भाग रे विभक्त करंती सो OB = OD ताले लिख परिबा OB = OD and OA = OC ओके बट हमें स्क्वायर रे कोन पढितले कहलो स्क्वायर रे हमें पढितले जे दुटा डायगोनल परस्पर को तो बाइसेक्ट करूचंती प्लस से दुटा डायगोनल रे एंगल केते थिला 90 डिग्री रोम्बस रे भी सेम केस रोम्बस रे भी दुटा डायगोनल रे एंगल केते थिला 90 डिग्री बट हियर इन केस ऑफ रेक्टेंगल ओके the angle between these two diagonal is not 90 degree okay it is not 90 degree hence the diagonals are not perpendicular bisector they are only bisector not perpendicular bisector बुझियला मन रखथिबो जे रेक्टेंगल ले परस्पर को 90 डिग्री मीट करंती नाही चाहे हम लिखि पारिबो सो नेक्स्ट पॉइंट भी लिखि दबा the angle between two diagonals is not equal to 90 degree okay तो अब बुझिए गला these are the basic properties of rectangles right and in case of rectangles you have to remember that the angle between these two diagonal is not 90 degree okay जदि 90 degree हेई थांदा तो हम रेक्टेंगल कहै न थांते देखो हम कोन कहै थांते स्क्वायर कहै थांते बुझियला काहे कि स्क्वायर रो सब जाक साइड समान आउ ताको जे एंगल होची 90 डिग्री किंतु एटा 90 डिग्री नो ओके
And now we will discuss about the comparison among the parallelogram with all other quadrilaterals like kite, rhombus, trapezium, square and rectangle. Okay? So हमें वर्तमान कौन करिबा ना parallelogram सहित अन्य जहाँ भी quadrilateral रही जंदी तांको सहित हमें properties को compare करिबा then हमें finally कहिबा जे other जति की quadrilateral रहिले से माने केबे भी parallelogram हेई परिबे की से माने parallelogram रो property को follow करूचंती की जदि से माने parallelogram रो property को follow करूथबे then हमें कहि परिबा yes kite is a parallelogram यदि follow कर नथिबे लिखिबा kite cannot be a parallelogram यदि rhombus follow करथिबो हम कहबा rhombus is a parallelogram यदि follow कर नथिबो हम कहबा नाही rhombus is a parallelogram नुह okay so let's start with the first quadrilateral that is kite so हम वर्तमान कोन करबा ना kite को हमें कंपेयर करबा parallelogram सहित आ देखिबा जे kite ता parallelogram रो जो प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी parallelogram रो तीनटा थिला कोन से तीनटा कहलो फर्स्ट कथा होची parallelogram is a quadrilateral so it has four sides सेकंड कंडीशन कौन थिला ना ऑपोजिट साइड होची पैरेललोग्राम रा कोन इक्वल और थर्ड कंडीशन कौन थिला बेसिक कंडीशन जे ऑपोजिट साइड होचंती पैरेलल सो ए तीनटा कंडीशन बा तीनटा प्रॉपर्टी को काइट फॉलो करूची ना करूने हम देखिबा ओके सो लेट्स ड्रॉ दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए काइट ओके अच्छा काइट हमें कहा को कहबा जानि छे ना काइट रो एडजेसेंट बा कंसेक्यूटिव साइड्स होजन समान ताले एई साइडटा या से समान एई साइडटा या से समान बुझियला बट देखो यार ऑपोजिट साइड समान की नुहे एडजेसेंट साइड समान बट ऑपोजिट साइड समान नुहे बट इन केस ऑफ पैरेललोग्राम द ऑपोजिट साइड शुड बी इक्वल ऑपोजिट साइड गोटे को इक्वल होबा दरकार बट इट इक्वल की नुहे प्रथम कंडीशन नुही से हारी गला का द्वारा हारी गला पैरेललोग्राम द्वारा हारी गला माने पैरेललोग्राम रो प्रॉपर्टी को से फॉलो करि पारला नाही सो इट कैन नेवर बी ए पैरेललोग्राम ताले गोटे काइट केबे भी गोटे पैरेललोग्राम हे परिबा नाही ता रीजन कोन ना यार ऑपोजिट साइड्स सेम नहंती किंतु पैरेललोग्राम रो ऑपोजिट साइड गुडा को सेम ओके ताले से को प्रॉपर्टी को फॉलो करू नाही सेकंड प्रॉपर्टी को फॉलो करू नाही जदि ओ फर्स्ट प्रॉपर्टी को फॉलो करूची कोन चारटा साइड यार अछि बुझियला सो यू कैन राइट काइट कैन नॉट बी ए पैरेललोग्राम ओके नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल पक्ष हमें जीवा कौन सेटा ना ट्रापेजियम ओके तो देखिबा ट्रापेजियम डायग्राम ड्रा करिबा ए ट्रापेजियम अच्छा फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो कोन पैरेललोग्राम चारटा साइड थिबो ट्रापेजियम रे चारटा साइड अछि तले फर्स्ट प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करियोला सेकंड प्रॉपर्टी ऑपोजिट साइड इक्वल अच्छा देखिलो यार ऑपोजिट साइड कोन इक्वल नहीं इक्वल नो ए साइड से इक्वल नो बुझिले कि नहीं ये छोटा ये बड़ जदी भी इक्वल हेथिबो जदी भी इक्वल हेथिबो ताले ताको हमें ट्रापेजियम कहबे ताको हमें रेक्टेंगल कह देबा बुझिले कि नहीं तो एठी भी एग्जैक्टली सेकंड प्रॉपर्टी को ये फॉलो करूनी ऑपोजिट साइड में ट्रापेजियम सेम नुहंती बट पैरेललोग्राम सेम so it does not satisfy the second condition that the opposite sides are equal so it can never be a parallelogram तले हम कौन पाइले सेकंड ना trapezium cannot be parallelogram okay बुझियलाटा सल्ला देन नेक्स्ट कोन डायग्राम में वर्तन करिवा rhombus okay so rhombus a b c d हला rhombus रा हम जानि जंदी कोन चारटा को साइड सेम बोली बुझियला एबे देखिबा कंपेयर करिके अच्छा गोटे पैरेललोग्राम रा फोर साइड rhombus रा भी फोर साइड सो फर्स्ट प्रॉपर्टी सैटिस्फाइड सेकंड प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देखिलो यार ऑपोजिट साइड इक्वल कि नहीं जदि एटा 4 सेंटीमीटर हेतिबो एटा केते हेतिबो 4 हेतिबो सिमिलरली अच्छा एटा 4 ले एटा केते हेतिबो एटा भी 4 हेतिबो काना चारटा को साइड समान अच्छा एटा केते हेतिबो सेही 4 हेतिबो ताले कहले देखिया ऑपोजिट साइड समान ना समान नहंती यस ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए rhombus आर इक्वल सो दे आल्सो सैटिस्फाई द सेकंड कंडीशन थर्ड कंडीशन कोन ना ऑपोजिट साइड पैरेलल की
देखिल पैरेलल ना यस गोटे रंबस अपोजिट साइड पर पैरेलल तो थर्ड प्रॉपर्टी को भी से सैटिस्फाई करूची जेतो तीनटा को बेसिक प्रॉपर्टी को रंबस सैटिस्फाई करूची सो वी कैन राइट रंबस कैन बी ए पैरेललोग्राम गोटे रंबस को भी हमें पैरेललोग्राम कहि पारिबा ओके सो राइट दिस rhombus can be a parallelogram बुझियला काहे कि नेक्स्ट वर्तमान में जीवा का बागु को स्क्वायर अच्छा स्क्वायर देखिबा ड्रा करिबा ए बी सी डी स्क्वायर रो सब जाक साइड कोन सेम हला वर्तमान कंपेयर करो आ प्रॉपर्टी सहित चारटा को साइड यार चारटा साइड 1 2 3 4 satisfied सेकंड प्रॉपर्टी हला कोन अपोजिट साइड इक्वल अच्छा एटा जे 10 हुए एटा केते हेदिबो 10 हो ना तो अपोजिट साइड इक्वल हे गला अच्छा एटा केते हेदिबो 10 एटा केते हेदिबो 10 सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल सो इट इज satisfied थर्ड कंडीशन हला अपोजिट साइड पैरेलल की यस यार अपोजिट साइड होचंती पैरेलल so it satisfies the third condition also hence we can write that a square be a parallelogram और गोटे स्क्वायर को भी हमें पैरेललोग्राम कहि पारिबा square can be a parallelogram now coming to the last but not the least quadrilateral that is a rectangle what is a rectangle is a quadrilateral in which the opposite sides are equal and parallel yes or no yes एबे हमें कंपेयर करबे या प्रॉपर्टी सहित अच्छा यार चारटा साइड यार केतरा साइड चारटा साइड फर्स्ट प्रॉपर्टी सैटिस्फाई सेकंड प्रॉपर्टी हला अपोजिट साइड इक्वल होबा कथा ऑटोमेटिकली या तो अपोजिट साइड इक्वल इटा लेंथ breadth so it satisfies the second condition third condition is opposite sides are parallel yes in case of a rectangle the opposite sides are also parallel so it also satisfies the third condition since the rectangle satisfied all the three basic conditions of a parallelogram so we can write that a rectangle can be a parallelogram बुझियला ना नहीं ताले जेते कि हम क्वाड्रिलेटरल पढिले ता भितर एई तीनटा पैरेललोग्राम कहि परिबा बाकी एई दिटा को हम पैरेललोग्राम कहि परिबा नाही ओके